Then example 2, inviting tenders, 131 के ऊपर है. Example 2, इससे पहले हम चलेंगे प्लेसमेंट के ऑर्डर तक. डियर सर, थैंक यू फॉर योर लेटर नंबर दिस एंड दैट, और आपने कंफर्म किया उसके अंदर कि दिस इज योर order that you want to place. Then comes the tender part. The tender क्या है? Exhibit 10.4 page 131. 131 नंबर पेज पे आप एग्जाम्पल 10.4 पे आएंगे. उस पे आप देखेंगे कि इनवाइटिंग टेंडर, टेंडर्स अखबार में अक्सर दिया जाता है, मांगे जाते हैं. तो वो क्या, किस तरह? Dear sirs, we intend to buy the following items of furniture for our new branch to be opened shortly in Subhash Market, Janakpuri. Please quote your lowest rates and also indicate the terms and conditions of payment. अगर आपने किसी से कुछ चीजें खरीदनी है तो टेंडर भेजते हैं, और अगर आपको वो लो और आप उनसे अपने लोएस्ट रेट्स मांगते हैं, और आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप उन टेंडर्स में से किस सेलेक्ट करने जा रहा है. क्वांटिटी 35 सिंगल पेडेस्टल स्टील ग्रे कलर डेस्क. आइटम का नाम है पहले क्वांटिटी 35 आइटम्स single pedestal steel grey colored desk. Then specifications, length उसकी है 60 inch, width उसकी है 40 inch, height उसकी है 28 inch. ये आपको चीजें चाहिए. तो आपने उसके अंदर टेंडर डिमांड किया है. You need lowest quotation or lowest price of the goods that you actually require from a certain potential seller. और यूजुअली ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर मांगे जाते हैं, जिनके लिए आपको अपनी क्लियरेंस भी बाद में देनी होती है. We intend to buy the following items of furniture for our new branch to be opened shortly in Subhash Market, Janakpuri. Please quote your lowest rates and also indicate the terms and conditions of payment. Quantity 35 items, single pedestal steel grey color desk. Specifications, length 60 inch, width 40 inch, height 28 inch. Number 6, there are 6 other heads of things that are actually required, and they are double pedestal steel grey colored desks. They are double yeah. So number 6 जो है वो है double pedestal steel grey colored desk. The length is पहले single desk और दूसरे उन्होंने स्टील के मांगे 6 डबल डेस्क जिनमें दोनों जाने बच्चे बैठ सके या स्टूडेंट्स बैठ सके. लेंथ उनकी होगी 62, विड्थ उनकी होगी 48. विड्थ इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि डबल है, और हाइट उनकी 28 होगी. हाइट विल रिमेन द सेम ताकि सीट पर बैठे हुए लोग दूसरी सीट वालों से बड़े ना हो. And then there are 8 more items required. Typist poster steel chairs with seats and backrest padded with foam. और typist के लिए कंफर्टेबल किस्म की सीट्स भी रिक्वायर्ड है जिसपे height should be 16 inch, width should be 17 inch, adjustable up to 20 inch. Typist को poster steel chair है, उसकी height 16 इंच होनी चाहिए और उसकी हाइट बढ़ाई भी जा सकती है. जिस तरह आप कुर्सी पे बैठने हो तो अपनी हाइट के मुताबिक और अपनी कमर के मुताबिक उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं, ताकि ऊपर बैठना हो तो थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, उसको नीचे बैठना हो तो नीचे कर सकते हैं. तो 20 इंच मैक्सिमम हो. ऐसा ना हो कि टाइप करने के लिए टाइपराइटर तक झुकना पड़े. तो इट शुड बी एडजस्टेबल टू within 4 inch mark. Forward to hearing from you soon. और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्ड करेंगे पोटेंशियल सेंडिंग कोटेशंस, और उस सूरत में कोटेशन भेजी जाएगी. पोटेंशियल सेलर जो है वो अपनी कोटेशन भेजेगा कि लोएस्ट प्राइस में मेरे पास ये चीजें मौजूद. Dear sir, many thanks for your letter number dated this and that. We are pleased to quote the following rates. One moment. Right. So we are, dear sir, many thanks for your letter number this dated. We are pleased to quote the following rates for the furniture you require. Item description, single pedestal, grey, this and that, or close to calculation. The net price each rupees 1425. सिंगल पेडेस्टल ग्रे कलर डेस्क मंगवाए तो उसकी एक की प्राइस होगी 1425 रुपए, और चूंकि उसकी क्वांटिटी जो थी वो काफी ज्यादा थी, शायद 60 थी, 60 को 1425 रुपए उतना बजट बनेगा एक आइटम का. उसके बाद नंबर 2, डबल पेडेस्टल स्टील ग्रे कलर डेस्क जो 6 रिक्वायर्ड थे, उनकी कीमत है एक की 1963. ये लोएस्ट प्राइस है. अगर आपको पसंद आएगा तो आप उसको सौदा फाइनल करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो आप किसी और से राब्ता करेंगे.
Number 3, typist posters seals chairs with seat and backrest pallet with foam height adjustable from 16 inch to 20 inch, width 17 inch, length 12 inch. From back to front, depth of backrest 5 inch, width of backrest 10 inch, color. यानी उसकी specification, item description और उसने दिए एक एक नंबर देके सामने नेट प्राइस उसने दिए सारी चीजों की और पर हेड की कीमत जो है वो साथ लिखी है. Packaging and transportation charges from our works to Subhash Market and other duties and taxes are included in the price quoted above. You hope to receive your order soon and help you furnish your new branch office without delay. We assume you of our prompt services and we assure you of our prompt services and shall deliver the goods within fortnight of the receipt of your order. ये तमाम स्टेटमेंट लिखने का मकसद ये है कि आप बड़े फार्मर हैं, आप बहुत कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं. You take your client very seriously and very politely and you intend to take this project further. A folder description describing the last well furniture we manufactured is enclosed to make it convenient for you to select any other item you may wish to buy now and future. एक folder भी हम भेज रहे हैं जिसके अंदर अपने last well furniture के जो सैंपल्स है वो उसमें शामिल है ताकि आप अगर देख के उनमें से कुछ लेना चाहें तो आप भेज सकते हैं. यानी बिजनेस को फर्दर कन्वीनियंट रखने के लिए और ग्राहक को घेरने के लिए आप मजीद उसको इंसेंटिव दे रहे हैं और मजीद चॉइसेस दे रहे हैं ताकि वो आप तक ही टिका रहे और किसी और कंपेटिटर को के सामने हैरेस ना हो जाए और उसको उसकी इन्विटेशन पे सकम ना कर जाए. योर्स फैक्ट्री हरि प्रसाद मैनेजर. प्लेसिंग द ऑर्डर. उसके बाद जनाब ऑर्डर प्लेस किया जाता है. पहले हमने कोटेशंस मांगने वाला, फिर कोटेशन देने वाला और ऑर्डर वाला. और इस मौके पे जबकि बड़ा प्रोजेक्ट है उस में हमने टेंडर देना और टेंडर के ऊपर जो है उसका रिस्पांस जो है सेंडिंग कोटेशन का आइडिया. और उसके बाद नंबर 3 प्लेसिंग ऑर्डर. जब आप उस चीज पे राजी हो जाए तो यू प्लेस एन ऑर्डर. डियर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोटेशन. नाउ कोटेशन नंबर डेटेड दैट we should be grateful if you could arrange to deliver the following items at 327B Subhash Market, Janapuri, opposite police shop Chucky, within a fortnight, यानी 14 दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर मुझे भेजें. सिंगल पेडेस्टल 3 डन हो गई. 35 चीजें उसने मांगी, आप भेज दें. मुझे आपके रेट्स पसंद आ गए, सेंड देम टू मी. नंबर 2 डबल पेडेस्टल 3, यानी लोग बार टेंडर्स बुक से लोगों को भेजते हैं और जो लोएस्ट प्राइस और अच्छी डील दे रहा होता है उसको आप राजी हो जाते हैं और उससे आप चीज खरीदने पे तैयार हो जाते हैं. There are 41 people in today's. Those of you who joined late, you should move to page 132. यहाँ पे हम placing order पे जा रहे हैं. Placing order पे order place कर दिया गया है. It is very thoughtful of you to have sent us your folder. We shall certainly use it for our future transactions with you. Our bankers are United Commercial Bank, Chanakpuri branch, and we propose to pay you by a cross check drawn on them. हमारे जो बैंक का जो क्रॉस चेक है वो हम आपको भेजेंगे जिसमें से मनी सिर्फ आप ही ड्रॉ कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता. प्लीज कंफर्म दैट दिस अरेंजमेंट सूट्स यू. और ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगी जिससे हमारा भी लीगल काम होगा और आप भी लीगल तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी जगह पे. फर्दर ऑन, इनवाइटिंग कोटेशंस. Example 3, Birla Education Trust, Building Department, Pilani, Rajasthan, reference this and this and that. ये सारा दिया गया, right पे डेट दी गई है. Dear sirs, subject quotation for 300 kVA transformer, 300 kV का ट्रांसफार्मर जो है उसके लिए quotation जो है वो इनवाइट की गई है. We are interested in buying one 300 kV transformer, the details of which are given below. We shall be glad if you will please send us your lowest quotation together with all details, date of delivery, etc. at an early stage. हम भी जब कभी 50,000 से ज्यादा की कोई चीज खरीदते हैं तो हमें कम से कम 3 कोटेशंस देनी होती है और उसके लिए फिर हम जो लोएस्ट प्राइस वाली चीज है वो हम क्लिक करके वो खरीदा करते हैं. हमारे अपने डिपार्टमेंट में ये हुआ है. हमारी परचेज कमेटीज में वो यूजुअली ये तरीका यूज करते हैं. Similarly here,
if they are supposed to buy a transformer, तो ऐसा नहीं करेंगे मार्केट में जो ट्रांसफार्मर महंगे से महंगा पसंद आ गया वो ले लिया. Rather, the rule is at official places to buy the cheapest one and the best one that you find from the market. It should be best, but also cheapest among the three at least. Exhibit 10.8, a core quotation. Dear sir, quotation for 300 kV. In response to your inquiry dated 4 December, we are pleased to submit below our offer for the supply of hangers transformer. उसके जवाब में hangers transformer की details है. Exhibit 8 continues. Specifically, hangers make 300 kVA outdoor type, 3-phase, 50 cycle, oil immersed, naturally cooled, double wound core type transformer manufactured in accordance with IS 2026-62 and with following details: no load voltage, tapping on HT side, plus minus 2.5% and plus minus 5%. Vector group reference DY11, temperature rise A in oil 40 degrees C in winding 50 degrees C. Terminal arrangement, यानी सारी वो टेक्निकल डिटेल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो उससे दिए हैं. स्टैंडिंग फिटिंग्स, एक्सेट्रा जो कि इस चीज के अंदर मौजूद है. ऑयल कंजर्वेटिव विद फिलिंग होल एंड कैप ड्रेन प्लग, उससे बाहर को न होने का इसमें ये चीजें शामिल हैं. 300 kVA 11,433 V number of हमारे 23,200 each. Right. तो ये सारी डिटेल्स आपको इसके ऊपर मौजूद है जो टेक्निकल डिटेल्स हैं. प्लेसिंग द ऑर्डर, जब आपको ट्रांसफार्मर की एग्जैक्ट चीजें जो चाहिए थी वो आपको मिल गई कोटेशन के अंदर, तो आपने फिर प्लेस करना है ऑर्डर. आप फिर ये नहीं कहेंगे मैं सोचूंगा, मैं अबू से पूछ के बताऊंगा या मैं अपने प्रिंसिपल साहब से पूछ के बताऊंगा. नहीं, यू आर हेड ऑफ द परचेज कमेटी and you are supposed to deal with those things according to your own expertise and according to your own office as such. You will do it accordingly. Say thank you sir, dear sir, thank you very much for your quotation. The 3603 dated 15 November 2014. The terms and conditions indicated therein are acceptable to us. Please send the HT and LT cable and boxes also and include the extra charges in your bill. जो चीज missing है वो भी इसमें ऐड करें और extra charges भी ऐड करें. A cross check drawn on the UCO bank for rupees 11,780 is enclosed as desired. Yours faithfully, BN7, maintenance officer, employer, check number TR467A21 dated 22. This and that. Inviting tenders. इस पे हम देखते हैं कि पेज नंबर 135 के ऊपर inviting tenders की क्या particularities है. Let's see. While quotations are generally sought from a few selected sellers, notices regarding tenders are advertised in newspapers. एक मेन फर्क है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि टेंडर आप उम्मूमन अखबार में दिया करते हैं जिसमें आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं. कोई यानी एक ओपन इनविटेशन होती है कि कोई भी उसमें जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो अप्रोच कर सकती है. जबकि कोटेशंस आप सिलेक्टेड किस्म के पोटेंशियल सेलर से लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर लेना है तो आप जाएंगे ऑफिस सेक्टर और वहां पे कंप्यूटरों की 5, 6 या 4 दुकानों उससे कोटेशन लेंगे और उसमें से आप जो आपको पसंद आएगी, जो आपको वारा खाएगी जैसे कहते हैं, वो आप ले लेंगे और बाकियों को आप रिजेक्ट कर देंगे. जबकि टेंडर एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए आप फिर बेशुमार इसको इनवाइट कर लेते हैं कि जो आपके मेयार पे पूरा उतर सकता है और जो बेहतरीन ऑफर करेगा उसको आप लेंगे. While quotations are generally sought from a few selected sellers, notices regarding tenders are advertised in newspapers, magazines, etc., inviting prospective sellers of services and goods to quote their rates for doing a job or supplying goods specified in the notice. When a tender is accepted, the successful tenderer has to sign a contract to do what he has promised. For example, universities में जब नया कैंपस बनाना हो तो आप contracting potential contractors के लिए tender
जारी करते हैं। हमने एक नया प्रोजेक्ट करना है जिसके लिए टेंडर हमने मांगा है कि क्या क्या आप हमें सर्विसेज दे सकते हैं, उस पर आपको जो पसंद आता है आप उसको ले लेते हैं। When a tender is accepted, the successful tenderer has to sign a contract. तो उसमें उसको साइन करना होता है कि तुमने एग्री किया हमारे साथ, इस टाइम फ्रेम में तुमने ये करना है और इतने इतने पैसे तुम्हारे साथ हमारे जो है वो फिक्स में, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं डिमांड करोगे, ना ही हम उसको देने के रवादार होंगे। अगर कोई डिले होता है तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, और अगर हमारी तरफ से कोई गलती होती है तो हमारी जिम्मेदारी होती है ऐसे केस में। Most organizations have a tender is generally invited for a job whose execution is spread over a period of time. जैसा मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी का अगर आपने कोई कैंपस बनाना है, जिस तरह आजकल कालाशाह काकू में बड़ा रिवाज है यूनिवर्सिटियों का कैंपस, यूईटी वहां पे बन गई है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वहां पे बन गई है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का वहां पे कैंपस जो है वो भी फंक्शनल होने के करीब है। तो दे built those premises or buildings over a period of time, and for that they needed a contract with a potential building contractor who would build that project or undertake that project for enough time, and for that they send tenders first up in the newspaper because that's a legal way of proceeding. Otherwise, one can be accused of favoring or favor or favoritism or nepotism if one doesn't announce things in the newspaper. आप नौकरियों के लिए अखबार में ऐड देते हैं ताकि सब खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, और वो चीज सिक्रेटिवली ना हो रही है और अपनों को नवाजने के लिए ना की जा रही है। Whose execution is spread over a period of time needs adequate prior preparation, और जिसके लिए ठीक ठाक होमवर्क करने की जरूरत हो, जिसे प्लानिंग कहते हैं। It may be the construction of a road, building, bridge, or bulk supply of goods or rendering of service. पे आपने सोलर का प्रोजेक्ट करना है किसी जगह पे, बहुत बड़ी कोई जगह है जहाँ पे आपने सोलर प्रोजेक्ट करना है, तो आप सोलर की कंपनी से टेंडर्स मांगते हैं कि भाई हमें ये कार्य करना है, तो आप हमें अपनी कोटेशन और आप हमें अपनी सर्विसेज ऑफर करने की क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें से जो आप दोबारा खाएगा वो आप ले लें। Most organizations have devised standard forms for inviting and submitting tenders. Most organizations have devised standard forms for inviting and submitting tenders. An example of each of these forms used by the Central Public Service Department of the Government of India is given below. Notice inviting tenders. Tenders are hereby invited for, और उसके बाद आपने वो प्रोजेक्ट लिख देना है। Estimated cost rupees, इसके बाद हमारा बजट जो है वो इतना है, इसमें हमने ये करना है। 2. Contract documents consisting of the detailed plans, complete specifications, schedule of quantities of the various classes of work to be done, and the set of conditions of contract to be complied with the person whose tender may be accepted, which will also be found printed in the form of tenders, can be seen at the divisional subdivisional office between the hours of 11 a.m. and 4 p.m. every day except on Sundays and public holidays. Tenders, which should always be placed in sealed covers with the name of the work written on the envelope, will be received by the division subdivisional officer, division subdivision up to this and that on the dash 20, and will be opened by him in his office on the same day. ये उसके लिए उन्होंने स्पेशल फॉर्म on PWD form number this, which can be obtained from the office of the divisional subdivisional officer concerned on payment of the sum of rupees and that in cash, and it is a stamp paper होता है उस टाइप के टेंडर्स के लिए फॉर्म होता है। The time allowed for the carrying out of the work will be found mentioned therein. The contractors should quote in figures as well as in words the rates for amounts tendered by them, the amount for which each item should be worked out, and the requisite totals given. When a contractor signs a tender in an Indian language, the percentage above or below in the case of Public Works Department form number 7, and the total amount tendered in the costs in the case of Public Works Department from form number 8 and 12 should also be written in the same language. In the case of illiterate contractors, the rates or the amount tendered should be attested by a witness. अगर वो illiterate है, लिखना पढ़ना नहीं जा सकता, तो एक पढ़े लिखे witness के signatures होने चाहिए कि जो उसने amount लिखी है क्या उसने अपने हवास में रहते हुए लिखी है या गलती से लिख के लिखी, क्योंकि अगर उसका टेंडर एक्सेप्ट हो जाए और बात हो गई कि मेरा ये मतलब तो नहीं था, तो
प्रॉब्लम बन सकते थे, इसलिए विटनेस का पढ़े लिखे विटनेस का साथ होना जरूरी है. Earn money amounting to rupees, this and that, in currency notes must accompany each tender, and each tender is to be in a sealed covers, superscribed tender for an address to the divisional subdivision. The contractor whose tender is accepted will be required to furnish security for the due fulfillment of his contract, consisting of a lump sum payment of this and that. तो ये बाकी चीजें आप सारी पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं. Tenders for works. I have a tender for the execution of the President of India of the work specified in the undertaken memorandum within the time specified in such memorandum at the rate specified therein, and in accordance in all respects with the specified designs, drawings, and instructions in writing referred to in Rule 1 thereof, and in Clause 11 of the annexed conditions, and with such materials as are provided for by and in all other respects in accordance with such conditions so far as applicable. Memorandum उसके नीचे दिया जाएगा. General description ये और इसकी cost आपने बतानी. Estimated cost ये. Earn money, security deposits. इसके लिए आप sample जो tenders हैं और memorandum है वो Google से देख सकते हैं वो किस तरह होता है. Earned money, security deposit, including earned money, percentage, if any, to be deducted from bills, fees, this and that, percent, time allowed for the works from date of written order to performance. Item number, item of work unit. So ये works की case में है. Per this, rate tendered in figures, rupees and words, this and that. और उसके नीचे date of day of witness, address, and why should this tender be accepted? We have been agreed to abide by and fulfill all the terms and provisions of the said conditions of contract annexed there to so far as applicable or in default therein. तो आपने ये सारी चीजें देख ली हैं, तो ये आप इस तक पढ़ेंगे. I move to example 1. Example में आप देख सकते हैं tender number this, duplicating machine, quantity ये. Few more examples of notices for tenders that appear in newspapers are given below. जो newspaper में tender मांगे जाते हैं या दिए जाते हैं वो ये हैं, इस टाइप के हो सकते हैं कि भाई tender number this, material duplicating machine, number 2 BLC PUR2, stencil 5 quantities packing, quantity 1 पहला और दूसरा 2 नंबर 3 reads this and that. ये सारी टेक्निकल चीजें जो आप देख सकते हैं. ये टेक्निकल अगर आपने कभी टेंडर नहीं देखा तो आज ही अखबार लाएं और उसमें टेंडर नोटिस पढ़ें, उसमें किस तरह दिए जाते हैं. अगर उर्दू वाले नहीं देखते, अंग्रेजी वाले देखते तो डॉन अखबार लाएं, न्यूज लाएं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून लाएं या नेशन लेके आए या कोई ऐसा अखबार लाएं जिसके अंदर जो ट्रेड और इस तरह की आइटम्स होती है तो उसमें आपको टेंडर्स डिमांड किए गए जो है उनकी डिटेल्स. एग्जांपल ये नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स, सी टेंडर्स ऑन वर्क ऑर्डर बेसिस or through rate systems are invited from the approved contractors and laborers in construction. Time is running out, 10 more minutes to this class. Take for example 2, 3, electricity, civil construction division, idle, substation, Majhola, Muradabad, tender notice number this. और अंग्रेजी में आप देख सकते हैं कि nature of work, serial number 1, name of work, earnest money, cost of tender 15, time allowed 6 months. Continued down there. Providing road and drains at Idle Colony, Lukushad, Muradabad. 400 earned money, 5 उसका टेंडर की कॉस्ट है, 2 months के टाइम में बनाना है ये सारा. तो जो इस टेंडर को पढ़ेगा आपने वो उसकी तरफ लपकेगा और कहेगा हम बनाएंगे और इसकी जो कॉस्ट है उसके अंदर अंदर बना के देंगे आपको. तो उसमें फिर अगर पार्टी को पसंद आ जाए तो उसको सिलेक्ट करेंगे. Review question: in what way is quotation that is different from a notice inviting tender? ये दोनों फर्क आपको पता है कि quotation जो है स्पेसिफाइड किस्म के वेन्यूज के उससे मांगी जाती है, जबकि टेंडर जो ओपन होते हैं वो न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं.
What factors should be borne in mind in sending quotation, describing the information that must be included in a letter, placing for it. ये सारी चीजें आपको आप देख चुके हैं इससे पहले. एक्सरसाइजेस के नीचे मौजूद हैं. I move to chapter 11, sales and circular letters. ये क्या होता है? Chapter 11. Before this class ends, please we should have an idea कि sales and circular letters क्या होता है. Chapter objectives क्या हैं? To develop the skills of writing an effective sales letter by providing detailed guidance on how to arrest the potential buyer's attention and to induce in him an irresistible desire to buy the product. Sales or circular letters वो होते हैं कि आपने सेल करनी है कोई चीज और आपने अपने बायर तक पैगाम पहुंचाना है. एडवर्टाइजिंग में ये सबसे ज्यादा चीज काम है कि भाई you should have the language and the skills to reach the desired mindset, desires of and hit the desires of the buyers. जब buyer की आप desires तक पहुंच के कि वो चाहता क्या है अपनी language के जरिए अपनी product की value के जरिए you are there, your product might be sold without any serious problem. On how to arrest potential buyer's attention and to induce in him an irresistible desire to buy the product. Communication goal. A sales letter is one of the important instruments of sales promotion. Despite unprecedented advancements in advertising through the print and electronics media, to be effective, it should catch. आजकल print और electronic media के जरिए आपको पेशेवर तरीकों से ग्राहक तक पहुंचने के तरीके आते हैं. जब आपने घी का डिब्बा बेचना है तो आप टीवी के ऊपर और अगर आप अच्छी मॉडल हैं और उसके साथ अट्रैक्टिव किस्म की directions ये चीज को advertisement की अच्छी है तो your product is there. Once the other बात सबसे अलग और सबसे जो बात मतलब उर्दू में यूज हुआ उससे भी जो है सकती है आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए अट्रैक्ट करते हैं. Sales letter is one of the important instruments of sales promotion despite unprecedented advancement in advertising through the print and electronic media. आप आजकल आप YouTube सुन रहे होते हैं अचानक ऐड आ जाता है 10 12 ऐड आता है YouTube के ऊपर किसी भी चीज का उससे वो आपकी साइट को हिट करते हैं याद दिलाते हैं कि ये चीज आपने डेली ले लें. It should catch the attention of the reader, excite his interest and curiosity, and induce him to buy the goods or services offered. It should begin with attention, catching the device, and end with induce. वाले वो आपकी attention grab करें. आप से अपने कमरे में फैमिली के साथ बातें कर रहे हो टीवी के ऊपर ऐड आए और आपकी attention grab करें. उसमें कुछ ऐसा मसाला हो क्या आप लगते कि भी देखो सही ये सैड में है क्या. When that ad is about to end, it should induce action in you. यार इस बार मैं मार्केट गया तो मैं चीज लेके आऊंगा देखे तो ये है क्या. तो ये एक प्रोडक्ट एक्सरसाइज के अंदर था. The main body of the letter जब आप क्लासिकल सेल्स लेटर की तरफ जाते हैं तो उसमें ये चीज होनी चाहिए. It should provide convincing arguments vouch for the quality of the product. There are sundry ways of catching the attention. Some of these are making a sparkling statement, special appeals or offers. लगा दी जाती है इस प्राइस में ट्राई कर रहे हैं या हम आपको इंश्योरेंस उसके ऊपर दे रहे हैं या गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं हम आपको उस पर दे रहे हैं तो यू कैन बाय रीडिंग एन एनेक्डोट और स्टोरी. The main body should draw attention to facilities such as trial offers, guarantees, free samples, etc. The last part of the letter should cleanse the issue by prompting action with inducements such as limited time, quantity offer, special bargain offer, convenience in ordering, prices and extra items, etc. That letter is written to transmit a message to a number of persons simultaneously. As the message does not need to be created again and again, save time, money, and effort. Its structure is the same as that of other business letters, and the style persuasive about its purpose.
mass production of variety of consumer goods, there is a race for capturing the market. And market में बेशुमार उनके ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, बेशुमार सेल करने के लिए का भी सामना है और आपको उसको सेल करने के लिए बेहद एफर्ट भी करनी पड़ती है. Sales centers as well. A number of things have been required. There are three main ways of doing so. Number one, mass media, radio, FM, internet. उसके ऊपर आप एड mass media होगी. ऐलान किए जाते थे चीजों के, ये चीज आई है अब ये ले लें. Personal context, दूसरा personal context, you know, the key companies reach sales letter. तीसरा है sales letter. तो आप जगह जगह पता है ये भी advertisement की है, तो form. Because it's more effective and large and varied audience has to be reached. पहला तरीका सबसे बेहतरीन है, क्योंकि हर एक शख्स तक पहुंचता है, हर एक शख्स देखता है, बात भी पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचता है, इंटरनेट लोग यूज करते हैं तो उसके जरिए पहुंचता है. आजकल एसएमएस के जरिए लोग अपनी प्रोडक्ट्स या ऑफर्स जो है वो भेजते हैं. हमें भी खाली की डिटेल आ रही होती है, ये डेली के ऊपर 25% सेल लगी है, डिवाइस पे 73% इस बार लगती है 14 अगस्त में, तो उसका मैसेज बार बार की बजाय एसएमएस के जरिए पहुंचता है. वी वेंट आउट टू jeans. So ये चलता है सिलसिला. The first is more effective and a large and varied audience has to be used for prompting sales articles. Anytime this problem might drop, so yeah, send me this is the class which will be next week and resume things from here. We have 1 minute and 58 seconds left. Until then, let's read what is there. Personal context is such as bicycles, toothpaste, hair oil, pens, bulbs, etc. Manufacturers generally prefer to advertise on radio, television, film, etc. on popular newspapers and magazines. The other two methods are used for a relatively limited consumer market. Only a selected number of prospective buyers can be approached personally or through correspondence. Personal contact can be very effective, but it is expensive and time consuming, and so it is normally used for a few selected products. There are situations where number of people a good sales letter is like a successful advertisement. It gets the attention of the reader, excites, then turns into curiosity and reduces the by the goods or services offered. If you analyze the structure of some of the effective advertisements, you will find that the following steps are taken to construct them. Number one, getting the reader's attention. One. Number two, is desired by convincing him that your product or service is the best in the market and that he needs it. Number four, motivating him to act quickly. That is his priority. Readers' attention is caught by layout, color scheme, illustrations, catchy phrases, striking statements, questions, quotes, etc. ये सारी चीजें आप कर सकते हैं.